बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद उस्मान अहमद कुरैशी एंड यू आर वाचिंग उस्मान अहमद रिएक्शन। नाज़रीन, उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अपने घर वालों के साथ खैर खैरियत से होंगे और हंसी खुशी ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। नाज़रीन, हमने जो सीरीज़ शुरू की हुई है हैबिट्स टू विन हेयर एंड हेयर आफ्टर, आज उसी एपिसोड नंबर 8 है, जिसका टॉपिक है प्लान अहेड विद ब्लॉक स्केड्यूलिंग या ब्लॉक शेड्यूलिंग। नाजरीन, अगर इससे पहली वीडियोस आपने नहीं देखी तो उनका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से चेकआउट कर सकते हैं। मज़ीद टाइम जाए के बगैर अपनी वीडियो की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही मौजूद बेल आइकन को भी लाजमी प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बआसानी पहुँच जाए। इसके अलावा आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेजेस पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो नाज़रीन, मज़ीद टाइम जाए के बगैर अपनी वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। It's 8 a.m. You're fresh out of bed, dressed, and ready to start your day. You sit down at your desk, open your laptop, and stare at your screen. You've got a long list of goals you put together. You've got the energy, but here you are, not even sure what to do or how to start. We've all been here before. And in fact, we might find ourselves here very often. But rest assured, there's a simple solution. It's called block scheduling. Basically, what it means is that at the start of every week, or even the night before, you plan out your day hour by hour. And I know this sounds intimidating at first, but I promise it's not as intense as you think. Essentially, you're creating a skeleton for your day. Say, for example, you sat down every Sunday night to think about all the goals and tasks you need to accomplish that week. You'll take a pen and paper, or open up the Notes app on your phone or laptop, and do a brain dump of everything you need to get done. Then, once you've identified what you need to do and you've prioritized each task, write down which day or days of the week you'll work on each task. For a simple example, your day could look like this. You block off 8 a.m. to 10 a.m. to work on a long-term project that requires your full attention. 10 a.m. to 12 p.m. is reserved for catching up on class or work-related readings. 12 p.m. to 1 p.m., you've got a lunch and salah break. 1 to 3 p.m., you're back at it in class or work calls, and so on and so forth. Oh, and this goes into the evening as well. You block off time for dinner prep and eating, as well as getting in personal habits like working out and memorizing Quran. The idea is that you plan out your day beforehand so that once your day begins, you don't waste time worrying about everything you have to do and all of the time it'll take. Think about how often that happens. You've got 101 tasks on your plate. You start your day, but because you don't have anything specific planned, you spend 10, 20, 30 minutes debating which task seems less daunting and which tasks to procrastinate. And then when you finally begun, once you finish one agenda item, rather than have a specific next task ready, well, we do what most people do today. We grab our phones and start scrolling through text or social media. Before we know it, 30 minutes to an hour have gone by, and you're still unsure as to what you'll get done next. Block scheduling is an extremely effective tool to not only keep you on track of all your tasks, but to also hold you accountable throughout the day. If you've allotted a whole block to getting through a task you've been avoiding, procrastinating becomes that much harder. And once you're done with your initial goal, you know what exactly you're moving on to without finding excuses to waste time. And while it might be hard and overwhelming for the first few days, weeks, and maybe even months, with time, you'll get the hang of it. And you'll have saved so much time once you do, it'll be worth all of the effort you put in. What I find most incredible and empowering about block scheduling is that it's inherently built into the life of a Muslim. Praying 5 times a day throughout the day is one of the key pillars in Islam. And what Salah does to us in particular is that it makes us very much aware of what we're doing and where we're going to be throughout the day so we can plan accordingly. When I was a full-time student, for example, I always had to think about when I could schedule certain classes like lengthy chem labs or extracurricular activities to make sure I would have the time and be in a place where I knew I could pray. And as I grew older, I found myself planning my day around Salah. In other words, I was blocking off time in my day to pray. And soon, I slowly began to just plan everything else around those blocks.
Before I knew it, I was an expert block scheduler thanks to Salah. It's incredibly powerful to acknowledge how block scheduling has become a popular tool today, often promoted by self-help gurus or just regular individuals reflecting on their productive habits. And yet here I am as a Muslim who is programmed at a young age to think of my day in the same manner, to prioritize what is most important in my life. And just like that, my Muslim identity has set me up yet again for success. बिल्कुल नाजरीन, जैसे कि इन्होंने बताया ब्लॉक स्केड्यूलिंग, इसका बेसिकली मकसद क्या है कि हम एक तरीके से अपना जो एक स्केड्यूल बनाते हैं एक मतलब नेक्स्ट डे के लिए या पूरे नेक्स्ट वीक के लिए। और ये क्या होता है कि इसमें काफ़ी हेल्प होती है हमें कि हमें पहले से मालूम होता है, यानी कि पहले से हमने एक स्केड्यूल बनाया होता है कि हमने क्या करना है, यानी कि वो कौन सी चीज़ इंपॉर्टेंट है जिसको हमने पहले करना है। यानी कि सुबह तो नमाज़ तो आपने पढ़ ली, उसके बाद आपने स्केड्यूल बनाया कि उसके बाद मैंने कुरान मेमोराइज़ करना है, उसके बाद जो आपका लॉन्ग रन जैसे कि आप सब, उसके बाद क्या ब्रेकफास्ट आपने कर लिया, उसके बाद जैसे आपका लॉन्ग रन प्रोजेक्ट है जिसको आपके कोई गोल है जिसको आपने अचीव करना है, आप उसको उसका टाइम रखें। उसके बाद पब्लिक ग्रीटिंग्स या आपके सोशल वर्क, उसके बाद जो आपका लंच टाइम और ज़ोहर प्रेयर, इसी तरह की आप इवनिंग का स्केड्यूल बनाएं कि आपने शाम में डिनर के लिए ये टाइम है, प्रेप के लिए टाइम ये है, कुरान मेमोराइज़ करने का ये टाइम है। तो इससे हमें क्या होगा, क्योंकि हमने अक्सर नोट किया है कि जब हमारा स्केड्यूल नहीं बना होता, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम यही सूरत हाल होती है हमारे साथ, यही सिचुएशन होती है कि हमें जो है मतलब हम जो एक चीज़ को सोचते रहते हैं कि अब हमने करना क्या है, क्योंकि हमारे दिमाग में काम तो हमने उस दिन बहुत ज़्यादा करने होते हैं, लेकिन हम ये सोच रहे होते हैं, ये सोचने में हम आधा पौना घंटा निकाल देते हैं कि कौन सा वक्त हम या कौन सा काम हम पहले करें। तो अगर और उसमें हम आधा घंटा पौना घंटा हम ज़ाया कर देते, और अगर कोई काम हमारे जहन में नहीं आता तो जैसे किसी ने बताया कि बाकी दूसरे लोगों की तरह हम क्या करते हैं, मोबाइल निकाल के सोशल मीडिया पे मशगूल हो जाते हैं। लेकिन उसके बरक्स अगर हमने अपना स्केड्यूल बनाया हुआ होगा, अगर हम वो डे टू डे या आवर टू आवर हमारा जो काम है, जो हमारे टास्क हैं, वो एक तरीके से स्केड्यूलाइज्ड होंगे, असेंबल्ड होंगे, तो हम उसको जो हमारा जो टाइम है जो हम ज़ाया करेंगे मतलब सोचने में कि कौन सा काम पहले करना चाहिए, कौन सा नहीं करना चाहिए, वो हमारा बच जाएगा। और एक तरीके से ये मुश्किल काम है कि पहले जैसे कि बताया कुछ दिन, कुछ हफ्ते या कुछ महीने भी लग सकते हैं इसको एडजस्ट करने में, लेकिन इसका फ़ायदा बहुत ज़्यादा होगा। इसी तरह जैसे कि हम जैसे कि इस एज अ मुस्लिम जैसे कि आपको पता है कि हमने 5 वक्त की नमाज़ हर रोज़ पढ़नी होती है, तो वो क्या है, वो एक तरीके से हमारे स्केड्यूल उस तरीके से हमारा डेवलप होता है कि हमारा एक हैबिट बताई जा रही है हमें कि हम स्केड्यूल इतना ईजीली डेवलप कर सकते हैं अपने, और उसकी जो आदत है ये ब्लॉक स्केड्यूलिंग की, इसको हम अपने अंदर ला सकते हैं, और एज अ मुस्लिम ये हमारे लिए काफ़ी बेनिफिट होगा। तो नाज़रीन, दिस वाज माय रिएक्शन, आई होप यू लाइक्ड इट। इफ़ यू डिड देन प्लीज़ हिट दैट लाइक बटन एंड लीव डाउन योर लवली कमेंट्स इन कमेंट सेक्शन। और सबसे अहम बात कि इस वीडियो को दूसरों तक लाजमी शेयर करें ताकि वो भी इससे फ़ायदा हासिल कर सकें। नाज़रीन, सी यू सून इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो। टिल दैट टाइम, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।